Bajar. I'm consultant rheumatologist and immunologist with Moolchand Hospital, Delhi. Today we'll be talking about management of pain in arthritis. अगर आपको आर्थराइटिस डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी दिनचर्या में पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फैक्ट्स. अगर आपको आर्थराइटिस डायग्नोज हो जाता है तो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू टू मेंटेन अ डायरी, जिसमें आप ये नोट कीजिए कि कभी भी अगर आपका दर्द चेंज होता है या आपको किसी भी जोड़ में किसी तरह की सोजिश महसूस होती है, सो दैट वुड बी अ रेड वार्निंग साइन. You should know how the character of your disease is going about. Next is read about the disease. आपको अपनी तकलीफ के बारे में गूगल से या जो भी रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. दूसरा, आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से भी इस विषय में जानकारी ले सकते हैं. Let's start with the basic management of pain. The first principle is keep your joint moving. It is a misconception कि रेस्ट से आर्थराइटिस ठीक हो जाता है. You should always keep on moving, use your joints to their limits. But the catch is that आपको अपनी limits पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आपका घुटना दर्द कर रहा है उसके बावजूद आप 5 किलोमीटर्स की वॉक कर रहे हैं. But a walk of 2 kilometers will be very reasonable. You should keep your joints moving. Second point is please maintain a good posture. पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने जॉइंट्स को सही पोस्चर में मूव करते हैं, दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ. थर्ड इज नो योर लिमिट्स. नेवर स्ट्रेस योर जॉइंट्स बियॉन्ड देयर लिमिट्स. रिकग्नाइज कि कब आपको फैटीग होने लगती है. आफ्टर दैट जस्ट स्टॉप मूविंग द जॉइंट. यू मे टेक अ क्विक ब्रीफ रेस्ट एंड उसके बाद यू कैन कैरी आउट विद योर एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ. Weight maintenance is very important when it comes to the management of arthritis. In fact, obesity happens to be the most common cause of weight. तो अगर आप अपना वजन at least 5 to 10 kgs reduce कर लेते हैं, that would be very beneficial for your arthritis pain. And last of all, please quit smoking. Smoking has been proven to be a high-grade risk factor for the development of arthritis and progression of arthritis. So take a pledge to leave smoking right away, right now. Now let's discuss about the exercises. So there are two kind of exercises, low impact ones and high impact ones. If you are a patient of arthritis, please choose the low impact exercises. High impact exercises like vigorous running, jumping, squatting, or doing taekwondo or something, playing basketball or football is not advisable for you. So you should choose stretching exercises like yoga and basic exercises. You can go for a brisk walk, but up to a limit. Generally, as they say, exercising 5 days a week for 30 minutes will be a good option for you. Now let's discuss about medications. So first is over-treatment, second will be under-treatment, and third will be right treatment. So what does over-treatment means? Over-treatment means that at the just a small bit of pain, you go to the medication shop, just get a painkiller pill and just pop it. So अगर आप painkiller medicine ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, so that will be rated as a over-treatment. Under-treatment, बहुत सारे लोग ओल्ड एज में अपनी पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट डू दे डू? दे जस्ट स्टार्ट लिविंग विद इट. एंड इनफैक्ट जब तक कोई स्वेलिंग या कोई मेजर रेड फ्लैग साइन नहीं आता है, दे डोंट इवन कंसल्ट द डॉक्टर. सो दैट विल बी अंडर ट्रीटमेंट. एंड थर्ड विल बी राइट ट्रीटमेंट. जब भी आपको किसी भी तरह का कोई पेन होता है, यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू इट. अगर आपको ये सिर्फ पेन है, then you can take the drug like on over the counter available. You can take a paracetamol, or maybe if the pain is much more, an Ultracet can be taken. But they are pure analgesics. अगर आपके किसी भी joint में सोजिश आती है, then you will need NSAIDs for that. But मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि जब भी किसी तरह का ऐसा कोई साइन आता है, you should go and consult your treating doctor. बिकॉज अपने आप ट्रीटमेंट करने से कुछ समय तक वो डिजीज होल्ड होती है, लेकिन उसके बाद वो बढ़ भी सकती है. अदर एडवाइस वुड बी कि अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, so there are many topical creams that are available. So you can take a topical capsaicin or something
to relieve your symptoms, but then please go and consult your treating doctor as soon as possible. Now we'll talk about other alternative methods that can be undertaken. First is have a relaxation therapy. You should be practicing meditation or join some laughter club or anything that gives rest to your mind. It is very important because pain is what we feel, it's not what we see. Other thing is hot and cold therapy. So these therapies can relieve the pain temporarily. What do? The temperature difference between them when you have a hot paraffin wax bath or maybe a cold water insertion of your joint, they relax the adjoining muscles and bring a temporarily pain relief. So you can try them at your home. But last of all, if you require any kind of assistive device like using a cane is very important if you have disability of one of your knees, because it reduces the risk of fall and it takes the weight of your joint. तो जब भी आपको जरूरत लगे तो you should use cane or any other assistive device, maybe a knee brace or something for maintaining your arthritis. And I hope now you can manage your pain little bit. The information is helpful to you, but do consult your doctor at the first red flag and don't treat your symptoms by your own. Thank you so much.